Okay, so let's begin our lesson of linear inequalities officially. And before we start this, we need a recap of interval notation. You've seen it already. आप लोग statistics के अंदर और मेरे ख्याल से functions का जब हम domain और range का हिस्सा कर रहे थे तब भी we looked at mathematical statements like this. और even आपके December एग्जाम के अंदर भी एक छोटा सा सवाल था जिसमें something like this was there apart from stats. ठीक है. So I would like to ask one of you कि इसका क्या मतलब है, the first statement over here. How do I translate this in English? I just want to know this. अच्छा, ये तो आपने एक बता दिया कि 5 is greater than or equal to x. Can I call it as x is less than or equal to 5? So I want all of those values of x which would be less than or equal to 5, right? So I can simply write this as x is less than or equal to 5. Okay, what about the second one? Can I say something about this second one over here? Anyone who would like to contribute to this answer? This symbol over here? Acha. So that is absolutely correct. Greater than is obviously the direction जहाँ ये open face है. जैसे भी आपने इसे याद रखना. So x is greater than or equal to, the underline shows equal to, and that is 10. So x is greater than or equal to, let me just write that in a better way, or equal to 10. Okay. What about this one? You've seen these statements in statistics, data in a frequency table with class intervals. I used to call them as class intervals. They are basically intervals. So iska kya matlab hai? X is what? I see a -1 over here. I see a 5 over here. Iska kya matlab hai? Are there any limits in between which my x lies? Or okay, so somebody is saying that x lies in between -1 and 5. So that is absolutely correct. That is what this means. This is your lower limit. This is your upper limit. If I am technical and I want to write this, I would say x is greater than or equal to -1, but less than or equal to 5. But if I'm just talking naturally to someone, I'll say my x lies in between -1 and 5, where both of these numbers are included. So x is greater than or equal to -1 and less than or equal to 5. It simply means x lies in between. I'll just write it as I would write it in my notes, in between -1 and 5, both included. Obviously the -1 is also included in this, the 5 is also included in this. I am not singling them out, both included. Okay, anyways, that is just a very short way of writing them, as we would call them in a non technical language. So we've described all of these. Iska matlab hai कि you are comfortable in notations like these, but just don't focus on these sentences over here क्योंकि अभी हमें dots का नहीं पता. We don't know what a number line is, so we've not seen it, तो हम ये draw नहीं कर सकते. What about sentences like these? Can you describe these in English? If you can try. What are these? Yes, Amir. X is less than 5. Oh, that's a good answer. X is less than 5. So you basically want all values of x which are less than 5. 5 is not included in this. Less than 5 का English या उर्दू में मतलब ये है, you need to stay less than 5, 5 से नीचे, 5 से कम. 5 is not included in this. I don't see an underline over here, so be careful. X is less than 5. Can I go up? Okay. All right. Answer to the second one. Anyone who would like to answer this really quickly? Okay. If you would have been a bit louder, शायद मुझे like फायदा हो जाता.
greater than 10. Greater than 10 simply means 10 is not included. You need to stay above 10. So every number that equals 10 is not going to be in this list. You need to stay more than that. What about this then? इसका क्या मतलब है? Yes, अमीर बताओ. तीसरी दफा तुम अंदर जाके बाहर आए. Anyone who would like to answer examples is guys, please don't take your time. ये तो अभी पहला पेज है. You see how many pages we have to go through. You're only wasting your time. You spend good. So that is simply going to be x lies in between negative 1 and 5, but these numbers are not included. X should not equal minus 1. X should not equal 5. Because I don't really see an equal sign in between, like beneath these symbols. So you need to be careful. X is in between, oh, in between -1 and 5, both non-inclusive. Oh, INCLUSIVE. Both non-inclusive. Non-inclusive. I've deliberately used this word. शायद आपने पहले ना सुना. It simply means not included. Non-inclusive, not included. So math में terms का आपको idea होना चाहिए. All right, let's move forward. Uh, you've seen sort of these symbols before जब हम domain और range की बात कर रहे थे. Can you explain what this might mean? Can you repeat that? How can you be less than negative 10 and also less than infinity? क्या मतलब? Good. So you want to be greater than negative 10, but it's obviously gonna be less than infinity. Okay, less than positive infinity. So basically you're just telling me कि minus 10 से ज़्यादा हो लेकिन infinity से कम हो. That's basically telling me कि तुम minus 10 से ज़्यादा हो, because infinity never reaches. So you just want to be more than negative 10. So I would strongly advise that if you come across a situation like this, it's probably not technically right to answer it like this. I would prefer that you answer your statements like this and just simply say x is greater than minus 10. That's it. You stay more than minus 10 and less than infinity. That's obvious over here because nobody can ever reach infinity. You don't reach that. Anyways, any other symbol that you might come across is this one. A bit common, not really common in exams, like in book में ज़्यादा common है. If you want to mention that your domain or your answer or anything that you're considering, ये domain वैसे ही copy paste हुआ था. It covers all of the x-axis or all of the values of x that you can imagine, चाहे decimals हो, whole numbers हो, rational हो, irrational हो, जैसे मर्जी. Just write x belongs to all real numbers. X is a part of all the real numbers that I can think of. It covers the whole numbers, the decimals, basically everything. So this is a pretty cool symbol if you can minimize your working. लेकिन आपको assess prep या असल एग्जाम में ढूंढना पड़ेगा कि ये symbols कहाँ हैं. If you can't find them, just write this English and you will get it done with. Okay, but this is rare कि कोई आपका ऐसा answer हो which basically tells you every number is included. You are basically considering all the numbers out there. लेकिन अगर आपको सवाल में ये कभी लिखा हुआ नजर आया तो obviously you it's better that you know what it means. ऐसे ना हो कि आप लोग इस पे फंस जाओ. Anyways, I know what inequalities like these mean. मुझे इनका मतलब पता है. But how do I recognize them, like यानी put them on a number line? Now, why is this important? You should know कि जो आपका really recent, I think ज़्यादा recent नहीं होगा, November 2022 का एग्जाम, इसके अंदर पीपल सीरियस प्लीज, इसके अंदर आई थिंक इट वाज क्वेश्चन 3 और 4 ऑफ इट. उसने पूरा पहले आपको ये सवाल दिया कि आंसर निकालो किसी क्वेश्चन का. इट केम आउट टू बी लाइक दिस एंड आफ्टर दैट प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस थी आपको कि ड्रॉ अ नंबर लाइन. और उसने प्रॉपर आपको टूल दिया हुआ था, द लाइन टूल, दीज ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको फिल्ड सर्कल और अनफिल्ड सर्कल दिया हुआ था. इवन द लाइन वाज आल्सो गिवन टू यू. So you just had to drag and drop and place the numbers at their correct places. The axis numbers were not given to you. You had to insert them on your own.
So please do not take this image which is in front of you lightly. काफी recently आपको ये सवाल आया है. So try to be careful on this. अगर आपके किसी भी सवाल का आंसर है this thing over here, and I'll zoom into this so that you can see this really clearly. To represent inequalities on a number line, we show the range of numbers by drawing a straight line. Okay, I think ये थोड़ा सा कट रहा है. Yeah, now it's fine. So we show the range of numbers by drawing a straight line and indicating the endpoints by either an open circle or a closed circle. What's the difference between an open circle or a closed circle? Closed circle का मतलब है the value is included. याद करो मैं included या inclusive का word पीछे use किया हुआ है. So when you see an underline, इसका मतलब है the 5 is included in my list of numbers. When you don't see an underline, you will say that 1 is not included in the list of numbers. How do I represent this information on a number line? Filled circle का मतलब है the value is included. Unfilled circle का मतलब है the value is not included. So सबसे पहले identify your boundaries. My boundaries are 1 and 5. Right? तो मैंने सबसे पहले 1 और 5 पे दो boxes बना दिए just like this. Right? And I write 1 and 5 inside them. नंबर टू, जहां आपके पास अंडरलाइन हो वहां फिल्ड सर्कल डाल दो, जहां आपके पास अंडरलाइन ना हो वहां अनफिल्ड सर्कल डाल दो. एंड ऑब्वियसली यू नो व्हाट दिस मींस इन इंग्लिश. X lies in between 1 and 5. So obviously the line is gonna be over here. X lies in between 1 and 5. This simply means that you are interested in all the numbers which are in between these endpoints, and that's it. सो जिस बंदे को ये पढ़ना नहीं आता, हाउ द हेल कैन ही ड्रॉ दिस नंबर लाइन एंड गेट हिज मार्क्स इन द एग्जाम? खुद सोच लो. ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ. नवंबर 2022, ऑब्वियसली यू माइट नॉट हैव एक्सेस टू दिस एग्जाम, लेकिन यू शुड नो कि दिस एग्जाम contained a full-fledged question of this where you had to draw a number line. अब ये ना कहना हम assess prep पे draw कैसे करते हैं, उसने आपको tools दिए हुए थे, drag and drop दिया हुआ था, खुद सोचो कैसे होगा. So once again, I'm reiterating the fact over here. ऊपर भी लिखा हुआ है, but यहाँ भी. Filled circle means that that endpoint is to be included, and you will see the underline beneath your symbols. Unfilled circles would mean that the endpoint is not included, and you will be using these symbols over here. Okay. So let's go to our next example over here. Some other examples that you might see. Okay. If I want to represent, अगर आपने notes बनाने हैं, obviously this is a sentence that you would have written down already. आप सिर्फ ये दो examples पे गौर करो. Let's look at the left example. X is greater than 2. अगर आपको इसकी इंग्लिश नहीं आती, ऊपर वाली एक्सरसाइज से दोबारा गुजरो. You should know what it means. X is greater than 2. You only have one endpoint over here, which is 2. So you make a circle over here at 2. Do you see an underline? No. So it has to be an unfilled circle. Now, where do you go to? Do you go to the right side or do you go to the left side? Greater than 2 matlab the right side is generally greater, so you just go to the right side and you place an arrow. Why do you place an arrow? Because there's no end point. You just go till greater than 2 till infinity. Okay, so all of these numbers over here, they are included in my answers because they all are greater than 2. Now 2 is not included. Specifically the number 2 is not included as I don't have an underline over here. That is why I have an unfilled circle. इसका क्या मतलब है? यू शुड नो इट्स मीनिंग इन इंग्लिश. एक्स इज लेस देन 5, जिसका मतलब है 5 पे एक सर्कल डालो. It's gonna be unfilled because I don't see the underline, and all of these numbers are gonna be included. You need to place an arrow which basically tells you that don't stop over here. अगर आप डॉट डालते हो it means you stop. Arrow डालते हो it means you continue to go here. So there's no limit to the left side. You continue to go till minus infinity and there's no stopping you. Similarly, a filled circle means that the value is included. You know that. So if I say x is greater than or equal to 3, iska matlab hai I'm going to place a circle at 3, but this time it's going to be a filled circle, right? And once again, there's no limit on the right side, and it's going to place an arrow, and all of these numbers are going to be included. Okay, so these all are there. Even the number 3 is there because there is an equal to sign. There is an underline in below this clip symbol. X is less than or equal to 6. You should know how this reads in English, क्योंकि obviously एग्जाम में आपको ये चीज़ नहीं दी होगी. मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये सिंबल्स आपने खुद ही इंग्लिश में या उर्दू में या फ्रेंच में इंटरप्रेट करने हैं, whichever language you like.
So once again, you place a filled circle at 6, you go to the left side because you want less than or equal to 6, and you don't stop. So that is going to be it. Okay. So now let's move forward. We've understood the symbols, but is this all that my question is going to ask me? Obviously, when I was telling you about this November 2022 question, I specifically said that you ended up at this answer. How did you get an answer like this? आपने कौन सी equation या किस चीज को solve किया that made you land at this answer? That is a question that has not yet been answered. Okay. Please get seated quietly because we need to continue. Can I scroll up? Please get seated quickly. We cannot stop for anyone. Intervals. Intervals. Integral कुछ और होता है. Ibrahim, sit down and please have your notebooks out. Okay. All right. Let's move forward. Okay. So people, anyone who has any confusion with these three diagrams over here. Once again, those who joined Abhi, you need to look at the screen क्योंकि ये चीज आपको तकरीबन पहले से आती है. When I say n is greater than -1, right? How do I represent this on a number line? सबसे पहले मैंने -1 पे एक सर्कल लगाया. Since I want to be greater than that, greater कौन सी साइड होती है? Right side. So I draw an arrow on the right side. It has to be an arrow. Okay. And that's it. I leave that arrow hanging because arrow का मतलब है you keep on going till plus infinity. Why is this an unfilled circle? Because -1 is not included. There is no underline over here. मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, those people who joined in late, November 2022, इस एग्जाम के अंदर नॉट टू लॉन्ग अगो, जस्ट 1.5 years अगो, आपको नंबर लाइन ड्रॉ करने का सवाल आया हुआ है. अब खुद सोचो कि एसएस प्रेप या असल इन्वायरमेंट में ड्रॉ कैसे होगी. ठीक है. जिसको इसका मतलब नहीं आता, अनफिल्ड सर्कल का मतलब नहीं आता, इस लाइन का मतलब नहीं आता, ही कैनॉट ड्रॉ इट. राइट. सो मुफ्त के नंबर आप अपने जाया करोगे. आई डोंट वांट दैट. इफ यू वांट दैट तो कोई नहीं. खैर, एक आया था. Yeah, एक सवाल means it can be an 8 mark question, it can be a 3 mark question. You can't stop it. It was actually an 8 mark question. ठीक है. All right, people. Second example. Would anyone like to read this out? इसका मतलब क्या है English में? Okay, so this time, as Talha said, or equal to, इसका मतलब है you need to place an a filled circle. Filled circle का मतलब है the 3 is included, and you want to be less than this. Less हमेशा left side होती है, so you go to the left side, right? इसका क्या मतलब है? Anyone who would like to state this? राफे स्क्रीन पे देखो. Oh, so you can simply say, Ibrahim. Yes, you can simply say that n lies in between -1 and 3, where both are not included, or as Talha was saying, n is greater than -1 but less than 3. Okay. And basically they both need to be unfilled circles because these are not included. Ibrahim, what did I say about unfilled circles? Good. Ayan, what did I say about filled or unfilled circles? Good. Achieve. All right. So I'm sorry, I'm not gonna repeat this. I am moving forward. बस सिर्फ ये आपको बता दूं कि अगर कभी आपको ये एग्जाम मिल जाए, आपको मेरी बात याद आएगी कि ये ड्रॉ करना आया. Okay. Anyways, if you still want to understand easily about interval notation, you can look at this video, which you will not see obviously. So it can be the opposite. What if the number line is given to you and you want to write the interval notation for it? ऐसे भी हो सकता है. It can be the opposite case. Can you tell me the interval notation for A really quickly? Good. X is greater than or equal to 6. Bro, can't you see the filled circle? अंधे हो? अंधे हो ना? Right? Okay, good.
Next up, power number B. Can anyone tell what this interval notation would be? बताओ 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 बताओ. X is less than 3. It's an unfilled circle. Just have it as a less than. Okay. आप बेशक ये ड्रॉ ना करो. I will share these notes afterwards. ये drawing जरा लंबा काम होता है. What about power number C? Anyone else? Not Talha, obviously. No, not you. Aziz, can you answer part C? क्या होगा ये? Come on, Aziz, think. मुश्किल नहीं है. X lies in between -2 and 1. Good. फिल्ड सर्कल है. तुम तलहा की कॉपी कर रहे हो, ज्यादा तेज ना बनो, पता है मुझे. Okay. Now there are gonna be two separate answers to this. You need to understand that. There are two separate answers for this. One for this guy and one for this guy. इसका मतलब है I am less than or equal to 0. Whereas this guy says you need to be more than 1. So more than 1 is simply x is greater than 1. Less than or equal to 0 would simply mean x is less than or equal to 0. ऐसे भी हो सकता है that you have two separate answers on the same number line. Now obviously there is no number that can satisfy both of these, so you just put them as it is. Okay. Anyways. हाँ and obviously but आप there is no number that can satisfy both of them. अगर आप इसको satisfy करते हो ये बंदा आपसे नाराज होता है. अगर आप इसे satisfy करते हो this guy is gonna leave you in that sense. सही है. So don't do that. Okay. So basically we move forward. We have more examples to this, but you can find all of their answers below, so I'm not gonna waste my time on this. आगे चलते हैं. Okay. जाओ. Okay. People. Now I basically answer my question when I said कि how do I get these answers to plot on the number line? Obviously ये मुझे दिए तो नहीं होंगे. I need to get to these answers so that I can plot them on a number line, which was basically your November 22 question, right? So I have this sort of an equation, as you call it. Don't call it an equation, this question कह लो. How do I solve it in order to get an answer like this? कैसे? What are the techniques to solve this? I know how to solve equations. I don't know how to solve these guys. So we need to write a tip. Tip क्या होगी हमारी? Number one. You need to treat ऐसे ही है. You need to treat the inequality signs INQUA oh UALITY signs just like the do I have space? Yeah, just like the equal to sign. Okay. इसका क्या मतलब हुआ? Ibrahim, please stop laughing. This is not a comedy show that you want to laugh a lot. Okay. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है if you come across questions that have the inequality sign while you are expecting the equal to sign, do not panic. आपने अपने सवाल को बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है as if you had an equal to sign. यानी इसका क्या मतलब हुआ? You will solve your question as if this question was like this: 3x minus 2 equals to 1. और अगर ऐसे दिया होता कितना आसान है सॉल्व करना इसे. You just move the 2 to the you just move the minus 2 to the other side और 3 से डिवाइड करो and that's it. और तो कुछ नहीं करना आपने. So that is what you need to imagine. Examiner सिर्फ आपको तंग करने के लिए ये दे रहा है. Okay. But there is only one trick. एक ट्रिक है सिर्फ जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. लेट मी जस्ट इरेज दिस. एक ट्रिक जो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा विच इज द फॉलोइंग. If you divide or multiply both sides मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, if you divide or multiply both sides by a negative number. Ibrahim, control your language.
you would need to reverse the inequality sign. इसका मतलब आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा, अभी नहीं आएगा. ओके, if you multiply or divide on both sides by a negative number, you would need to reverse the sign. reverse the sign का क्या मतलब, अगर ये इस तरह दिख रहा है इसे आपको ऐसे करना पड़ेगा. ऑब्वियसली इस एग्जाम्पल में शायद ना करना पड़े, लेकिन आगे जाके आई विल शो यू एग्जाम्पल्स जिनमें करना पड़ेगा, और जो आपको एग्जाम में सवाल आया था उसमें भी आपको करना पड़ा था. which means this concept is tested by the examiner recently, that is inequality. you know अगर equal to का साइन हो, I call it equation. this is not an equation, ये अब inequality बन गई. It's not an equality now, inequality, right? So प्लीज राइट डाउन दिस एग्जाम्पल ओवर हेयर. ओके, और इसे बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करो एज इफ यू सी एन इक्वल टू साइन ओवर हेयर एंड टेल मी कि आपका x इज इक्वल टू व्हाट आंसर आता है. आई जस्ट वांट टू गेट दैट. ओके, कॉपी डाउन दिस क्वेश्चन ओवर हेयर दैट यू सी एट द बॉटम विद एन इक्वल टू साइन, नॉट दिस क्लिप साइन, और मुझे सिर्फ x का आंसर बताओ रियली क्विकली. वन आंसर है. ओके, नाउ लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन विद यू without the equal to sign and tell you that I will get the same answer. लेकिन अब x equal to 1 मेरा आंसर नहीं होगा, या x is greater than 1 होगा या less than 1 होगा, because there is no equal to sign over here. And I also need to draw my number line with this also. Okay, so सबसे पहले जब आपने इसे x is equal to 1 का आंसर निकाला, your first step would have been कि आप इस -2 को इस साइड पे लेके जाओ, right? Which converted this into a 3. अभी तक कोई confusion हो आपको? That hook sign is not bothering you anymore. आप अपना सवाल वैसे ही सॉल्व कर रहे हो जैसे आप नॉर्मली करते हो. अब्दुल्ला, Zayan and Sadiq, you guys are not doing anything. प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, आगे क्या करते हो? हाउ डिड यू गेट x इक्वल टू 1? आपने इस 3 को दूसरी साइड पर डिवाइड किया, ऐसे ही है ना? सो व्हेन यू डिवाइड दिस, डू यू गेट दिस आंसर? Did I change the direction or the movement or anything of this sign? It remained the same. क्या इस साइन ने मुझे तंग किया while I was getting my answer? No. Which basically means this is practically the same question as it was an equal to sign. You just need to imagine कि यहाँ कोई equal to sign पड़ा हुआ है. Just treat it as it is. Now I have not applied bullet number 2 over here. क्यों? In this question मैंने किसी भी स्टेप में किसी नेगेटिव नंबर से ना मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया. मैंने नेगेटिव नंबर को यहाँ ले जाके पॉजिटिव जरूर किया, दैट्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया. अगर मैंने यहाँ डिवाइड किया इट वाज विद अ पॉजिटिव नंबर. ये स्विचिंग ऑफ साइन सिर्फ नेगेटिव नंबर्स पे होती है. ओके, जिस तरह आई ऑलवेज ट्राई टू टेल इब्राहिम के व्हेन ही कम्स अक्रॉस नेगेटिव पीपल इन हिज लाइफ ही शुड टर्न अराउंड एंड लीव दैट प्लेस, बट ही डज नॉट. ठीक है, तुम्हारे पे करना शुरू कर दूं? Okay, can you draw the number line for this? Can anyone help me draw the number line for this? Hello, can anyone help me draw the number line for this? सबसे पहले मैंने अपना x axis draw किया. Okay, this is my x axis. Then I place 1 over here, right? Wait, do I place a filled circle or an unfilled circle? Unfilled, good. मैंने unfilled किया. Do I go to the right? अयान ने कहा right पे जाओ. Good, that's right. X is greater than 1. और अगर आपके पास शेडिंग की ऑप्शन है तो शेड कर दो, वरना ऐसे ही रहने देना. ठीक है, डन. रूल, अच्छा, रूल 2 का सवाल. ओके, सो प्लीज दोज हु आर लेट एंड दोज हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, अब आपको इस टॉपिक में सवाल इक्वल टू साइन के साथ नहीं आएंगे. यू विल गेट दीज हुक साइंस. Treat these signs just like an equal to sign and solve your question. That's it. कुछ और नहीं करना. Okay. And at the end, please learn how to draw your number line. Right. Let's see. Oh, number line मैंने ऊपर draw कर दी है. मुझे नीचे draw करनी थी. That's over here. Okay. Let's move forward. We need an example जिसमें मैंने sign change किया. Part number B is that example. Okay. So, hello, Talha. This is an example where you change the sign. Okay. सो प्लीज पार्ट नंबर ए को सॉल्व करो और फिर पार्ट बी को हम सॉल्व करते हैं. गिव मी एन आंसर फॉर पार्ट ए रियली क्विकली. यहां आप लोग बुलेट नंबर 2 यूज करोगे. सो सॉल्व दिस वाइजली. ओके,
पार्ट ए का क्या आंसर होगा? कम ऑन थिंक। राइट, सही है। I need everyone to get at this answer. I just don't want one guy to do it. फायदा नहीं है वरना. Solve this as if this is an equal to sign, and then just replace it with the hook sign. Okay. So if I scroll down to this, you will see that Talha is absolutely right, and you have your answer over there as well. Please copy that out. लेकिन part B आपने खुद करना है. Try to understand why am I replacing, sorry, why am I reversing the sign? क्यों मुझे जरूरत पड़ रही है साइन को रिवर्स करने की? If you have written down what bullet number 2. And when you solve it, आपने number line draw करनी है. You cannot move past this question unless you draw a number line. क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आया था तो पूरा प्रॉपर ये भी आपको आया था और नंबर लाइन ड्रॉ करनी भी आई थी. राइट, यू कैन नॉट स्किप दिस. क्या आंसर आया था पार्ट बी का? इसमें रूल 2 अप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. इफ यू मूव द 2x टू द अदर साइड तो ऑटोमेटिकली रूल 2 अप्लाई कर दिया विदाउट टेलिंग समबडी. x is less than negative. एक सेकंड, तुम इस 3 को यहाँ लेके जाओगे, ये -3 होगा. राइट, 7 - 3 क्या होता है? 4. -2 से डिवाइड करो तो क्या होगा? बट तुमने -2 से डिवाइड किया, साइन चेंज. डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर भाई, नेगेटिव पीपल जब भी हमारी जिंदगी में आए तुमने डायरेक्शन बदल के भागना. वो चौक उल्टा उसे 3 जाके भागना. सर when you divide, इसको हम आज तक नहीं समझा रहे कि ये भी करना है. You when you divide by a negative. लेट्स सी दिस सीखे. जब -2 को दूसरी साइड में लेके जाओगे, सीखे एक्चुअली डिवाइडिंग बाय नेगेटिव नंबर. I will tell you क्या हो. अलजेब्रा में तो इनइक्वालिटी वो इक्वल होता है, इक्वल रिमेन्स एंड इक्वल. वो तो उल्टा सीधा ही होता. इक्वल साइन यार, मैं इस हुक की बात कर रहा हूं, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी. अब ये राइट की तरफ खोल रहा है ना, ये लेफ्ट करूंगा, reverses the sign. Okay, let me tell you how. Okay, now people, wait. गौर से देखो वर्किंग ऑफ पार्ट नंबर 2 की. ये देखो, नहीं नेगेटिव 2 आया. मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ. साइन, तुमने साइन को नहीं चेंज किया. ये देखो, इस साइन की बात करो, मैं इस साइन की बात नहीं कर रहा था. मैंने कहा था इट रिवर्सेस द इनइक्वालिटी साइन, नॉट रिवर्सेस द साइन ऑफ द नंबर. कम ऑन पीपल, once again, as you are solving this question, people please don't talk and try. As you are solving this question, आपने सबसे पहले इस 3 को दूसरी साइड पे मूव किया. This converted into a -3 and you got a 4, right? Now the only way to solve this question is, Ibrahim इधर देखो, Ayan, you're not listening. -2 को आप करोगे यहाँ divide. This is a, people, this is a red flag. आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो, रेड फ्लैग. इब्राहिम प्लीज. सो नेगेटिव से जब भी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे, यू नीड टू रिवर्स द साइन. ये करना जरूरी है, एग्जाम में आया था. नहीं करोगे नंबर कट जाएगा. ऑब्वियसली इफ यू गेट दिस आंसर रॉन्ग, आपकी नंबर लाइन भी गलत होगी. हाउ डू यू अवॉइड दिस? देयर शुड बी अ वे टू अवॉइड दिस, ऑब्वियसली, राइट. लेट्स ट्राई टू लुक एट अ वे जिससे मैं ये रिवर्सिंग ऑफ साइन को अवॉइड कर सकूं. इट माइट नॉट ऑलवेज वर्क, but it will work in this case. Okay, now all of you are actually solving this question like this. Let me give you an alternate method over here. 3 minus 2x is greater than 7. Okay, Talha, hello. Can I move this minus 2x to the other side? यहाँ plus 2x हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना. So can I say 3 minus 7 is less than minus 2x? Did I, so sorry, plus 2x, अब minus नहीं है. Did I change the inequality sign? No, मैंने तो नहीं किया. क्योंकि प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में होता है. ओके, 3 - 7 क्या आपका होता है? इट इज -4. दिस साइन 2x.
प्लस वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं प्लस को काट देता हूं, ओके। नहीं, आई विल नॉट फ्लिप द साइन, क्योंकि अब एक्स का आंसर निकालने के लिए आई डिवाइड बाय अ +2, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने से कुछ नहीं होता, right? So this is actually gonna be -4 divided by 2, which is the same sign, and then x, and x is greater than a -2. मैंने तो यहां कोई साइन रिवर्स नहीं किया, देन हाउ इज दिस करेक्ट? मेरा वहां भी आंसर चेक करो, x इज ग्रेटर देन -2 आया। डू यू सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर इन द फर्स्ट स्टेप? व्हेन आई मूव -2x टू द अदर साइड, मैंने ऑटोमेटिकली साइन चेंज कर लिया था। यू गाइस जस्ट डिड नॉट सी दैट। पहले चेक करो x कहां है, where the hook sign is the pointed side। अब x कहां है, ऑटोमेटिकली where I have the open side, मैंने ऑटोमेटिकली साइन चेंज कर लिया था by changing the position of x, but I did not do the minus sign thingy and change the sign during any division because there was no negative number, okay? So you can be sneaky, आप ये रूल अवॉइड कर सकते हो, बट इफ यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन लाइक दिस, जहां आपको माइनस वाले यानी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना हो, यू नीड टू चेंज द साइन, you need to change the sign, okay? So please ये working भी note down कर लो, ये working भी note down कर लो। In the end, like at the end of the day, you should arrive at the same answer, x is greater than -2, x is greater than -2। मेरा आंसर गलत नहीं है, उलट नहीं है, it is the same answer। Contradiction तब होती अगर मेरा आंसर कुछ और होता। I got the same answer back, so I can avoid bullet number 2 by doing this sneaky method, लेकिन आपका आंसर सेम आना चाहिए, right? So the only tricky point in this inequality is whenever you divide or multiply by a negative number, यानी एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के थ्रू आप किसी दूसरी साइड पे लेके जाना चाह रहे हो, देन द साइन इज गना चेंज। एडिशन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज नहीं होता, मैं जितने मर्जी लोगों को इधर उधर ले जाऊं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में इट्स ऑल गुड। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ नेगेटिव नंबर में मसला होता है। वंस अगेन टिप देख लो, divide or multiply both sides by a negative number, you would reverse the inequality sign, okay? Can I move forward? Hello, can I explain this again या this again? ये वाली नीचे वाली चीज, okay। पीपल प्लीज डोंट टॉक, ये बहुत जरूरी है, अगर आपने ये अंडरस्टैंड ना किया आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा, ओके? नाउ पीपल, ये आपका सवाल है, ओके? Is your first step gonna be to move the 3 on this side and you get a 4, right? Now in order to get the answer of x, आपने इस बंदे को रिमूव करना है यहाँ से, which is a -2, right? When you put the -2 on that side, it's actually gonna be x is less than 4 divided by, sorry, -4 आ गया, 4 divided by -2, is that true? ऐसे ही है ना? What did you actually do? आपने एक नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन की है by moving it to the other side. Whenever you do such a thing, this sign needs to reverse. अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम काम करते हैं ना, एक्चुअली ये -2 यहां था और मैं उसे उठा के यहां ले आया। हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क? इट्स एज इफ आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अ -2 एंड दिस गाय कैंसल्स, तो यहां से -2 गायब हुआ और यहां रह गया। दैट इज द बेसिक नॉलेज जो इवन आपको बुक्स के अंदर भी मिलेगी। दैट इज वाई मैंने टिप में लिखा था, इफ यू डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय अ नेगेटिव नंबर, दैट वाज एक्चुअली फॉलोइंग दैट डेफिनेशन। So when you move somebody in multiplication or division to the other side, like in the denominator over here, it's as if you're dividing both sides by that number, but I don't show it, I just do it directly. So multiplication or division by a negative number, -2, would want you to reverse the sign. The direction of the sign needs to reverse. So that is why इस sign को अब मैं करूंगा change, and I would change its direction and I would convert it to this guy. But I would really advise कि आप वो जो alternate method है वो भी note down कर लो. If this ever confuses you, you need to have a backup. क्योंकि हम इस सवाल को गलत नहीं कर सकते, लिटरली मुफ्त के नंबर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है भी नहीं, राइट? सो प्लीज नोट डाउन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ योर वर्किंग
I don't know what happened to the graphics over here. Well, I think ab zara behtar ho rahe hain. So you can just check your working over here and over here. Make sure you understand both of them, and basically you are done. Okay. I have a few more questions for you guys, and then we will move on to graphing. Because this is not the only thing that has come in the exam. आपको एग्जाम में ग्राफिंग भी आई हुई है. ग्राफिंग के लिए आई वुड नीड टू रिवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विद यू गाइस, और उसके लिए भी तैयार रहना फिर आप लोग, क्योंकि रिवीजन अब एक किस्म की शुरू हो ही गई है, राइट. एनीवेज, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, अ क्वेश्चन लाइक दिस, अ क्वेश्चन लाइक दिस. सबसे पहले यू नीड टू ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि मैंने x को फाइंड आउट करना है. लाइक इफ देयर वाज एन इक्वल टू साइन ओवर हियर, आपने x को फाइंड करना है. फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ओपन दीज ब्रैकेट्स अप. ओके, नाउ ऑब्वियसली this is a minus 2. It's not, I am not actually moving towards the other side or doing anything, so opening up this bracket is not going to change any sign. मैं कोई इस साइड से इस साइड पे नहीं जा रहा. ओके, वहां साइन इसीलिए चेंज हुआ था बिकॉज आई वॉज एक्चुअली मूविंग अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड. दैट इज बेसिकली द की दैट चेंज द साइन ओवर हियर. अगर ये -2 इधर ही रहता, मैं साइन को चेंज करता ही ना. The reason why the sign change was I had to move this -2 to the other side. Okay, एक सेकेंड पहले चेक कर लें. सबसे पहले मैंने ये ब्रैकेट ओपन की. When I open up this bracket, it's -2x plus, oh, -6 is less than 10. Now you have two options, guys. Hello. People, या तो आप शॉर्टकट यूज कर लो, पहले ही इस बंदे को उस साइड पे मूव कर दो, so that it's a positive 2x. ऑटोमेटिकली यू आर गोना चेंज द साइन, यानी आपको पता लगे बगैर आपका साइन चेंज हो जाएगा. लेट मी शो हाउ. ओके, ये -6 है, ये 10 है, और ये +2x हो जाएगा. दैट्स इट. देन यू मूव द 10 टू द अदर साइड, इट बिकम्स -6 -10, द सेम साइन 2x. साइन चेंज नहीं हुआ. My moving this -2x to the other side to make it 2x, automatically it's as if the sign changed, but I don't see it. Okay, क्योंकि पहले the pointed corner was facing x, now the open face is facing x, so automatically मैं sign को change कर दिया. Please try to visualize that. 2x and this is gonna be -16 को एक पॉजिटिव नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, नेगेटिव से नहीं कर रहा. द साइन विल नॉट चेंज. डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x, और ये आंसर मेरा -8 आएगा, जो तलहा ने बिल्कुल सही कहा था. सो दैट इज गोना बी -8. इफ यू डोंट डू दिस स्नीकी मेथड, ओके, आप चेक करो कि असल में आपका आंसर फिर क्या आएगा. ओके, असल में आपका आंसर आएगा एज इट इज शोन ओवर हेयर, एंड आई जूम आउट अ बिट मोर ताकि आपको एंड तक आंसर आपका नजर आ जाए. या जस्ट जस्ट टिल दिस पार्ट, यहां तक. ओके, please see कि why do I need to change the inequality sign over here. It was like this, why do I need to change it? क्योंकि मैंने एक नेगेटिव नंबर को दूसरी साइड पे लेके जाके डिवाइड किया है. एक तो मैं दूसरी साइड पे लेके गया हूं, दूसरा मैंने डिवाइड किया. व्हेन यू डू थिंग्स लाइक दिस, योर साइन नीड्स टू रिवर्स, because dividing on the other side actually means you are dividing it on both sides. यहां से कट जाता है, so it vanishes from this side, और यहां से नहीं कटता, so it remains, right? ये हम working show नहीं करते, it's in our heads. That is why if you divide both sides by a negative number, your sign needs to reverse, और आपने रिवर्स कर दिया. बट माई आंसर ओवर हेयर इज ऑल्सो द सेम. x इज ग्रेटर देन -8, x इज ग्रेटर देन -8. इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी? यू जस्ट नीड टू प्लेस अ -8 ओवर हेयर. दिस इज x. यहां अनफिल्ड सर्कल ड्रॉ करो, ग्रेटर देन -8, एंड दैट्स इट. द एंड. सो प्लीज गेट टू द हैंग ऑफ दिस, गेट द हैंग ऑफ दिस. आप इन आसान सवालों में गलती नहीं कर सकते, गुना मिलेगा आपको. कैन आई मूव फॉरवर्ड? फसी, तुम सो रहे हो, एक्टिव होके बैठो. ओके, ऑलराइट. अगला सवाल मैं चाहूंगा कि मुझे इब्राहिम आंसर करे, इफ ही हैज द गट्स टू डू सो. Come on, people, answer this. Answer this, come on.
जस्ट सॉल्व दिस एज अ नॉर्मल इक्वेशन। जब आपको इस तरह की इक्वेशन दे तो आप क्या करते हो, लाइक टर्म्स को एक साथ करते हो, एक्सिस को एक साइड पे लाओ, नंबर्स को दूसरी साइड पे लाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। You're not going to do anything else. It's the same question. Okay, but my advice to you is, अगर ये नेगेटिव है तो इसे दूसरी साइड पे लेके जाओ ताकि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाए। डोंट प्ले अराउंड विद नेगेटिव नंबर्स अ लॉट। अगर आप नेगेटिव में प्ले करोगे आपको वो रिवर्सल ऑफ साइन एंड पे करना पड़ेगा। सो अवॉइड इट, करो ही ना। जस्ट मूव दिस बैक टू द अदर साइड, आपको रिवर्सिंग ऑफ साइन करनी नहीं पड़ेगी। आंसर निकालो जल्दी। देखो नोट्स बनाओ तो कुछ सीख रहा है। हाँ ये उधर जाएगा तो पहले कॉलेज आप आंसर बताओगे जब आंसर बताओ। क्वेश्चन तलहा से पूछो, आंसर बताओ। तलहा गलत आंसर बता। व्हाट से बहुत अब्दुल्ला क्वेश्चन आंसर ओए अभी ओके आज हम बैठ के आज हम एक I'm just trying to manipulate you के setup वगैरह। आपको सर इसमें गलती निकाले अच्छा। It means you don't have trust on your very bad। आंसर क्या है? माइनस एक्स नहीं, x is less than or equal to 4/7 सर नाउ करें ओके देखिए ऐसे ऐसे पहले पहले चेक तो कर ले, चेक तो कर। x is equal to or less than is like x is less than or equal to -4/7। अच्छा चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। ओके ओके no no guys now if you see the solution of this guys hello if you see the solution of this guy he will do the reversal of sign। क्योंकि इसने हमारी टिप को फॉलो नहीं किया। हमारी टिप क्या थी, ट्राई टू मूव द -5 ओवर हेयर ताकि ऑटोमेटिकली आपका साइन रिवर्सल हो जाए एंड यू डोंट हैव टू डू इट मैनुअल। ओके बट दिस गाय डिड नॉट डू इट, दैट इज व्हाई इधर जाके इसे साइन को रिवर्स करना पड़ा है। और अब्दुल्ला का आंसर बिल्कुल ठीक है जो उसने चीटिंग करके दिया है। x is less than or equal to -4/7। एक ही बात है। ओके जाओ अब। ओके उसने 2x कुछ करके जवाब दिया था। 2x कहाँ है? 2x कहाँ है? इसे जरा बाहर लेके जाके ठीक करो ये। Alright guys, आपको इसका दूसरा तरीका भी आना चाहिए। I'll just write it really quickly. My method which I wanted was axis को यहाँ ग्रुप करो और numbers को यहाँ ले आओ। Okay, so if I group the axis over here and the numbers over there, it's gonna be 3 minus 7 is greater than or equal to 2x plus 5x। okay, तो ये 7x यहाँ होगा और ये -4 यहाँ होगा। देन यू डिवाइड -4/7 और ये साइन ऐसे रहा और ये x रहा। x इज लेस देन और इक्वल टू -4/7, देयर इज नो रिवर्सल ऑफ साइन नीडेड। लेकिन क्योंकि इस बंदे ने ये टिप फॉलो नहीं की, ही एंडेड अप विद अ नेगेटिव साइन ओवर हियर। जब उसने डिवाइड किया ही हैड टू रिवर्स द साइन एंड देन ही गेट्स हिज आंसर। ओके if you have a negative number with the x over here, ये देखो, and obviously you need to find x find करने के लिए आपको इस negative number को गायब करना पड़ेगा। how do you make this guy go away from here? you divide it on the other side। dividing it on the other side का मतलब है it's basically as if you are dividing both sides by -7, where this guy gets cancelled with the numerator and this guy remains। so whenever you come across a situation like this, you are right, when x has a negative number with it and the only way to get rid of it is दूसरी साइड पे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। ऐसे भी हो सकता था, ये देखो x डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 4। अगर यहां भी आप -2 को अगर यहां भी आप -2 को इस साइड पे लेके जाना चाहते हो, यू वुड नीड टू रिवर्स द साइन बिकॉज you're moving a negative number to the other side and multiplying it। हमेशा multiplying और dividing a negative number में साइन आपका रिवर्स होता है।
अभी हमने डिवीजन की एग्जांपल्स की हैं, cuz I moved this into division. अगर मल्टीप्लाइंग का सीन भी हो तब भी साइन रिवर्स होगा. 3 मार्क्स आते हैं शायद, 2 मार्क्स शायद आपके सॉल्व करने के और एक नंबर लाइन ड्रॉ करने का भी होता. So you need to do that, okay? As you practice more, you will get the hang of it. So, but you can avoid this. आप इस चीज को avoid कर सकते हो if you follow these tricks, okay? आगे चलते हैं. You have more examples. अगर आपने वीडियो वाले किसी बंदे की एग्जांपल देखनी है, मेरी नहीं देखनी, you can watch this 1 minute or 8 minute video. आपको ये सारा लेसन समरी में मिल जाएगा, okay? You have a lot of questions over here. आप ट्राई कर सकते हो. Which one of these would you like to try? Obviously not all of them, only some of them, okay? Oh, the सबसे end वाला करना है, okay? So let's only do this question over here, and then we move forward, okay? Question 6. सबके answers आपको दिए हुए हैं. Final answers are given. The working is not given, okay? थ्री को सबसे मल्टीप्लाई होगा 5x प्लस के साथ एवरी बड़ा बड़ा चौकीदार लग रहा है. If you take this as a positive 3 and you move it to the other side, तब साइन चेंज नहीं होगा. If you want it to be a negative 3, चूंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ मैं यहाँ अटैच कर सकता हूँ, यहाँ मैं यहाँ अटैच कर सकता हूँ. If you want this to be a negative 3 and go to that side, sign change होगा. Okay? Make sure what you're doing. You need to know what you're doing. Yeah, exactly. This negative sign, ये वैसे लिखा हुआ नहीं, this negative sign is basically like this. It's like a bracket. You don't see a bracket because if you just place a negative 2 over here, तो यहाँ अगर उसने नेगेटिव साइन को खाली 2x को इसके साथ करना होता, वो या -2x भी तो लिख सकता था. Why did he place it over here? The negative sign placed over here and negative sign placed with -2x is a hell lot of a difference. This negative sign, if you attach it with the denominator, तब तो ठीक है, -3 होगा. If you want to attach it over here, it needs to be attached like a bracket, not just with a minus. X is greater than 5 over -17. अच्छा, चलो इसे हम सॉल्व करते हैं, okay? Do I have space to solve this? हाँ, थोड़ी सी है. Let's try to do it. Alright, so एक सेकंड, आंसर मैं आपको बता देता हूँ. आंसर ये है -7/17, 5 नहीं है, okay? How did I get this answer? Now, सबसे पहले the negative sign over here, please try to understand this. अच्छा हुआ कि हमने ये एग्जाम्पल कर लिया. Please guys, hello अयान, ड्राइंग रूम नहीं है तुम्हारा इधर, ऑलराइट. इब्राहिम हेलो, इधर प्लीज इस नेगेटिव साइन को समझने की कोशिश करो. At the end of the day, you will be forced to attach this guy with the denominator or the numerator. I would advise कि आप लोग इसे denominator के साथ attach कर दो because that's more simple. Okay? Why do I say that? Okay? I say this because अगर आप इसे denominator के साथ attach करोगे, it means it's a -3. And when you move this -3 to the other side, जैसे आप cross multiply type चीज करते हो, moving a negative number to the other side in terms of multiplication would automatically reverse the inequality. तो आपने नेगेटिव साइन को भी उड़ा दिया, इनइक्वालिटी भी रिवर्स कर दी, आधे से ज्यादा मसले आपके हल हो गए. So if I move this -3 over here, it's gonna be something like 2x plus 1 साइन चेंज हुआ with a -3 over here, 5x plus 2. ओके, इसी तरह फिर 2x plus 1, यहाँ साइन दोबारा से वही चेंज वाला रहा, -15x -6. फिर इसके नीचे मैं जाता हूँ, इफ आई हैव स्पेस, यस आई हैव स्पेस, दिस इज सिंपली गन बी, मैं 15x को यहाँ ले आता हूँ, इट्स गन बी 17x प्लस 15x हुआ था, और इसे यहाँ लेके गया, दिस इज गन बी -5, एंड देन आई मूव, सॉरी ये इसे क्या हो गया,
And then I move x is this minus 5 divided by 17. Oh, minus 7 था, सॉरी, minus 5 नहीं. Thank you for pointing this mistake out. चूंकि जब 1 यहाँ जाएगा -1 हो जाएगा, so obviously it's gonna be -7. Sorry for that mistake. अच्छा, अगर मैं दूसरा करता हूँ, लाइक आई अटैच अ माइनस साइन ऑन टॉप, ओके, मैं वो वाला भी कर देता हूँ, आई डोंट माइंड. No, 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 यार, this minus sign if attached with the numerator is not -2x plus 1. नहीं, यही तो गलती है. अगर उसने सिर्फ ये करना होता तो वो माइनस साइन यहाँ स्पेसिफिकली ऊपर क्यों नहीं उसने लिखा ऐसे, उसने माइनस साइन फिर ऐसे क्यों नहीं लिखा? The whole thing's negative, you need to attach a bracket to it. That's the मसला. यही तो वो चीज है जिससे पूरा पूरा सवाल हमारा गलत होता है. When you see a minus sign in the middle, it's your choice to decide, do I want to attach it with the denominator या numerator. आपने ये डिसाइड करना है. और अगर न्यूमिनेटर या किसी भी जगह एक से ज्यादा टर्म्स हो, you need to put a bracket with it. ये आपकी जिम्मेदारी है. यू कांट जस्ट प्लेस अ नेगेटिव साइन ओवर हियर एंड मेक द टू नेगेटिव, बस ऐसे नहीं हो सकता. ओके, सो अब मैं तलहा वाले मेथड से भी करता हूँ. व्हाई डोंट आई अटैच अ नेगेटिव साइन विद द न्यूमरेटर. मैं उससे भी आपको सेम आंसर ला के दिखाऊंगा, because obviously math cannot contradict itself and multiple methods need to give us the same answer, otherwise I'll stop teaching this subject if it contradicts. ठीक है, so I attach the negative sign with the numerator. इसका मतलब क्या हुआ? It's gonna be something like -2x plus 1 divided by 3, ठीक, is less than 5x plus 2, right? Okay, now if I move the 3 to the other side and multiply it, ये plus 3 है. plus 3 move करने से no sign changes. People, Ibrahim, इधर इधर, ठीक है. सो आई एम गोना डू टू थिंग्स ओवर हियर. एक, आई एम गोना ओपन दिस ब्रैकेट. दूसरा, मैं इस 3 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा. आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस 3 ओवर हियर एंड द साइन विल नॉट चेंज. इट्स अ पॉजिटिव नंबर. -2x -1 लेस देन, सेम साइन, साइन चेंज नहीं हुआ, 15x प्लस 6. ओके, अब आपको पता है यहां पॉजिटिव है. ओके, इट्स बेटर कि मैं -2x को इस साइड पे ले जाऊं ताकि मैं रिवर्सल ऑफ साइन को अवॉइड कर दूं. आई थिंक दैट्स बेटर. और नंबर्स को मैं यहां ले आऊं. ओके, पीपल ओवर हेयर, क्लास यहां हो रही है. राफे, अयान, बातें ना करो. सो आई मूव द 2x टू द अदर साइड. एक्सेस को यहां मूव करो और नंबर्स को यहां मूव कर दो. ठीक है, योर लाइफ विल बी मच इजियर. वंस यू डू दैट, मैं यहां आता हूं, यू विल गेट टू द पॉइंट के यहां आपके पास -1 और -6 है. द सेम साइन, द साइन डज नॉट चेंज. और यहां आपके पास 15x प्लस 2x है. यहां आपके पास -7 आया और यहां आपके पास 17x आया. एंड as you go down, you will get to the same answer as -7 divided by 17x. Is this a different answer? No. यहां भी x is less than -7 over 17 है, यहां भी x is less than -7 over 17 है. Does not matter. The sign did not change. Why? I never came across any multiplication or division on both sides by a negative number. I never did that. तो मिस हो गया. Okay, so I'll zoom out, show you both methods. Clearly see there is no contradiction. आप प्लीज इन दोनों को नोट डाउन कर लो and then we move forward to all of our answers. मैं इन्हें erase कर देता हूँ ताकि आप इन्हें देख ना सको. These might block your view. Sorry. ये आपका क्वेश्चन इसका आंसर था. इन्हें भी जरा मैं ब्लॉक कर देता हूँ. Okay? किसे रिपोर्ट करो? हाँ हाँ, ये सारे रिकॉर्ड है. आसान है बस. दिस इज गोना गेट टू अ नेक्स्ट लेवल. चूंकि एग्जाम में जब ये 8-9 मार्क्स का सवाल आया था, ये तो सिर्फ 6 मार्क्स थे. आखिरी 2 मार्क भला क्या थे? सीधे हो जाओ तुम. आखिरी 2 मार्क क्या थे भला? Guys, have you ever seen an equation? Have you ever, hello, have you ever seen an equation looking like this? कभी सॉल्व नहीं किया. हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एन इक्वेशन टू हैव टू इक्वल साइंस? पॉसिबल है? नहीं, बट इट्स पॉसिबल ओवर हियर. देखना अभी.
क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था अगर मैं ये टॉपिक टेस्ट करना है, मैंने ऐसा टेस्ट करना है कि मैं एक एक चीज टेस्ट करूं, विच ही डिड. ओके, सो ही मूव टू दिस, लाइक we're not gonna do this practice, ये बहुत आसान है. He moved to these questions. How do you do questions? This is called as a compound inequality. Compound का मतलब एक से ज्यादा. ओके, ये केमिस्ट्री वाला कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड inequality. These are questions which have two of these signs. एक यहाँ दिया हुआ है और एक यहाँ दिया हुआ है. How do you solve these now? कैसे करोगे? आपसे मुश्किलों से एक साइन नहीं सॉल्व हो रहा, दो कैसे सॉल्व करो? So you need to know the method for it. राफे, मैं ये तुम्हें मॉक में सवाल दूंगा, ठीक है? तुम्हारा मॉक इन बाकियों से फर्क होगा और तुम्हें मैं ये दूंगा सवाल, ठीक है? बल्कि तुम्हारा आधा एग्जाम इसी वाले टॉपिक से होगा. इट विल बी 150 मार्क एग्जाम, 50 मार्क से और बाकी 100 मार्क तुम्हें अलग से करना पड़ेगा. Alright, once I have a question which has two of these signs, how do I solve it? Abdullah, do you have any idea how I will solve this? A question with two of these signs. नंबर लाइन क्या मतलब? नंबर लाइन क्या? एक्स भी है इधर, मैं नहीं कर सकता. 2x+2 और कुछ ऐसे बस है यहाँ, ऐसे नहीं काम होता. ओके, सो आई नीड टू डिवाइड दिस इनटू टू क्वेश्चंस. आई एम इब्राहिम, इधर देखो, आई एम कंफर्टेबल विद क्वेश्चंस विद वन साइन. ओके, इन सवालों में तो मुझे कोई अब इशू नहीं है ना. Can I convert this into two questions with one inequality sign? How is that going to be possible? This is one question, this is another question. इसका क्या मतलब हुआ? दोबारा इसे गौर से देखो. मैं इस सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा. सबसे पहले 3 is less than or equal to 2x+2. This is one side of the story. Then the other side of the story is 2x+2 is less than 6. I solve both of these, plot them on the same number line and get my answer. Plot them on the same number line because it's the same question. Okay, how is that gonna work? So सबसे पहले, as I've realized I am unable to solve this question as it is, जैसे मैं कभी इसे नहीं सॉल्व कर सकता, तो मैंने क्या किया, इन दोनों का अलग सवाल बना लिया, इन दोनों का अलग सवाल बना लिया. That's it. इन दोनों का आप अलग नहीं बना सकते. Please don't try to be sneaky. Okay, it's only the people who are close. यहाँ ये दो, यहाँ ये दो. That's it. Okay, so I make a separate question of these guys, I make a separate question of these guys. Can anyone quickly solve this? ये लिटरली आप मेंटली भी कर सकते हो. इसका आंसर क्या है? आप 2 को इस साइड पे ले आओ और 2 से डिवाइड करो. आप 2 को इस साइड पे ले जाओ और 2 से डिवाइड करो. देयर इज नो रिवर्सल ऑफ साइंस ओवर हियर, कोई नेगेटिव साइन नहीं है. ओके, जल्दी से सॉल्व करो इसे. आंसर क्या आता है? पहला आंसर आपका आएगा व्हेन यू मूव द 2 ऑन वन साइड, दिस इज 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x. 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू x. एक ही आंसर आया. ओके, दूसरा आंसर क्या होता है? यू मूव द 2 टू द अदर साइड, इट बिकम्स अ -2. 2x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 2. ये दो आंसर्स हैं मेरे पास. आई नीड टू मेक सेंस ऑफ देम ऑन द सेम नंबर लाइन, व्हिच इज रियली इजी. हाउ? ना 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 ना, सबसे पहले मैंने, हाँ, ये 0.5 है. 1/2 अगर आपको तंग कर है, आप इसे 0.5 भी लिख सकते हो. आई डोंट माइंड दैट. ओके, मैं इसे साइड पे लिख देता हूँ. दिस इज एक्चुअली 0.5. ओके, please make this on a number line. Let me make my number line because I want to do this on the screen over here. मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ so that I have some space over here. मैं अपनी नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ इधर. What are the two numbers that I want to place? एक ये बंदा और एक ये बंदा. ओके, पहले कौन सा आएगा? पहले 0.5 आएगा. डन. और फिर कौन सा आएगा? 2 आएगा. किस पे मैं फिल्ड डॉट डालूं, किस पे अनफिल्ड डालूं? कौन बताएगा मुझे? Good. So I put the filled dot over here and I will put the unfilled dot over here. Okay. Now, मुझे बताओ, do I want to be less than 2? Less than 2 का मतलब क्या है? मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए. Is that true? ये पूरा. Right? Do I want to be more than 0.5? चेक करो. X is more than 0.5 जिसका मतलब है मैंने यहां जाना है.
what is the region that is satisfied by both of these inequalities? ये दरमियान वाला, right? ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना? So can you just write your answer as like, basically you want only that region which is satisfied by both of them, right? So if I can somehow simplify this, isn't this the same case जो मैं कहता था x is greater than or equal to 0.5 but less than 2? Yani can I combine them as this answer? X is greater than or equal to 0.5 but less than 2. मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसे. And then I can also, एक second, I can also draw my number line just like this, with a 0.5 over here and a 2 over here, a filled circle over here, an unfilled circle over here, and just this line, and that's it. खुद चेक करो. Solve this inequality and draw it on a number line. Solve करना है. Okay, let's zoom out of this and I'll show you कि असल में एग्जाम्पल में ये सवाल कैसे सॉल्व हुआ. Okay, as you see, इस बंदे ने भी अपने सवाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया. He got to two answers और इसने डायरेक्टली अपने आंसर को इस तरह कंबाइन करके लिख लिया. You can't understand to combine it unless you make it on a number line and understand कि मुझे दरमियान वाला हिस्सा चाहिए. Only then can you do it. Okay, so I think something is missing over here. There should be a number line which is missing जो मैंने draw कर दिया. I think you can see that really clearly. I'll zoom in over here. Number line आपकी थी just like this, x 1 over 2, this is 2. You need to be more than this and less than this, and basically this is what you want. Okay, that's it. If you go behind this guy, you will violate this guy. Sorry. And if you go above a 2, you are gonna disrespect this guy. Okay, so आपकी मर्जी. अगर आपने किसी को नाराज करके कोई काम करना है, don't do that. समझ रहे हो ना? Okay, you can also get this question like this: solve for x, but this time उसने आपको दोनों inequalities पहले से ही अलग अलग कर दिया. That is easy. I think this should not be any difficulty for you, so I'm not gonna tell you to do this. I want you to do questions which are again like this. So this should be your third question over here, बल्कि second question over here. Solve this compound inequality. Once again ये word और topic याद कर लो. Compound inequality. Compound का मतलब एक से ज्यादा. Give me two questions, solve them separately, put them on the same number line, and get your answer. Okay, come on. Ibrahim, सवाल नहीं कर रहे थे. क्या बात है, ऐसे काम नहीं होता. I'm sorry. Don't expect कि तुम किसी फ्री लेसन में मेरे पास आगे नहीं सीख सकते. आप बस स्पोर्ट्स की लेसन बोले नहीं और उसके बाद नहीं पता. बिल्कुल बात मौत है. बिल्कुल बात इसके लिए मौत है क्योंकि मैंने इसको कोई फ्री लेसन में अब हमें नए काम करने ये पुराने देखो जरा. ये मैंने ग्रेड 9 में ग्रेड 9 कब से ग्रेड 9 वहां इसने रिपीट किया. ये मैंने ग्रेड क्यों किया इतना स्टूपिड है यार तुम्हारा. यार मैं यार मेरे ज्यादा MYP5 अवॉइड हो गया. बहुत बड़ा अवॉइड हो गया. नहीं तुम किसको अवॉइड करना चाह रहे हो? लेट्स नॉट गो देयर. MYP5 में ना जाओगे भी तुमने लोगों की जिंदगी खराब कर. गुड गुड ये नहीं पहली बात. हाँ तो आप टू को यहाँ ले लो तो प्लस टू एक्स को यहाँ ले लो तो माइनस एक्स को यहाँ ले लो और वो हो
किसी का आंसर निकला? Okay, so I'll give you the first step as you solve it. Uh, Ibrahim, please. एक equation आपकी बनेगी which is gonna be these guys. Okay, 3x plus x. Oh, so sorry. 3x का कहाँ से आया? 3 plus x greater than 7x minus 2. एक ये है ड्रॉ लाइन. दूसरी आपकी क्या होगी? 7x minus 2. इसे मैं दूसरे पेन से करता हूं ताकि आपको जरा फर्क नजर आए. ओके, दूसरा ये होगा. Okay, so the answer of this guy really simple. Please remember the tip. x को उधर गैदर करो जहां x पॉजिटिव रहे ताकि रिवर्सल ऑफ साइन को आप अवॉइड कर लो. प्लीज ट्राई दैट. ओके, सो x को आप कोशिश करो कि इस साइड पे लेके जाओ ताकि इट रिमेन्स अ पॉजिटिव. एक्सिस को यहां गैदर करो, नंबर्स को यहां करो. सो 2 को यहां ले आओ. Right, as you do that you will end up with the following which I'm gonna write. 3 plus 2 minus 2 जब यहाँ plus 2 हुआ, sign remains the same. 7x minus x. Right, so if I go down, why is this blank? अच्छा, I have space. Good. So ये हुआ मेरे पास 5 greater than sign 6x. Okay, and this is simply gonna be 6 को जब divide करोगे it's a positive number. When you divide it the sign remains the same. 5 divided by 6. That's it. एक आंसर मेरे पास यहाँ आ गया. x is greater than 5/6. आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, but I'm just gonna let it remain as a fraction. अब दूसरे को सॉल्व करते हैं. once again follow the tip. x को वहां गैदर करो जहां x बड़ा हो और x पॉजिटिव में रहे. so 5x को यहां लाओ, -2 को वहां लेके जाओ. so 7x minus 5x, this sign -10 plus 2. 2x, this sign -8. If I make a mistake, please stop me. Is greater than -4. Okay, the sign does not change because there's no division multiplication by a negative number. Okay, let's draw this on a number line. पहले मैं चेक कर लूं मेरे आंसर्स ठीक हैं या नहीं. I just need to go down. Yes, my answers are correct क्योंकि एक तरफ greater than -4 है और दूसरी तरफ it is ओहो दूसरी तरफ it is less than 5/6. How will this look on a number line? This will look on a number line just like this. Okay, you need to understand that. सबसे पहले मैंने दो एंड पॉइंट्स अपने ड्रॉ किए which is a -4 and a 5/6. आपको पता है कि पहले -4 आएगा because it's smaller, फिर 5/6 आएगा. I need to be, and both are unfilled circles by the way, there's no underline. I need to be more than -4, यानी मैं -4 से इस साइड पे आ रहा हूं. ठीक है, whereas एक सेकेंड whereas I need to be less than 5/6 यानी मैं इससे पीछे की तरफ आ रहा हूं. What is the region that is satisfied by both of the inequalities? It's the middle one, right? Because if I go beyond -4 on this side I disrespect this guy, and if I go beyond this guy मैं इस बंदे के खिलाफ जा रहा हूं. You don't do that. क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, लेस देन 5/6 भाई. ग्रेटर देन कहां से आए? तुमने यहाँ तो साइन की रिवर्सल नहीं की, यहाँ कोई भाड़ मारा है. ओके, एंड बेसिकली इट्स ऑप्शनल. आप अपने आंसर्स को इस तरह अलग अलग भी लिख सकते हो और इस तरह कंबाइन करके भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी. ओके, बट द नंबर लाइन नीड्स टू बी लाइक दिस. नंबर लाइन में कोई और आपके पास गुंजाइश नहीं है. इट नीड्स टू लुक लाइक दिस. ओके, प्लीज ये सारे अपने आंसर्स नोट डाउन कर लो. These are your final answers if you've not noted them down, and just tell me when I can move forward. Although आपकी अगली क्लास शुरू होने वाली है, but we had to do a lot.
All right, guys, let us move forward. So, hello. Can I move forward on this? I'm pretty sure there is no masla in all of this. Hello, किसी को कोई मसला हो? Because we've done this a lot and we need to move forward. ये बहुत simple सी चीज है. Okay, done. Now, people. और सवाल भी हैं आपके. Obviously, I am not gonna do them. जब ये notes में upload करूँगा, all of these workings and all of these solutions are gonna be with you. लेकिन बस लेकिन लेट्स मूव बैक फ्रॉम दिस. आई सेव दिस. ठीक है, बस गए इसे सेव एज करते हैं, सेव नहीं करते. Okay. Guys. This is not where the story ends. Hello. This is not where the story ends. People over here. Ayan, Aziz, Rafe, pure please. Hello. Ibrahim, serious हो जाओ. प्लीज सीरियस हो जाओ. इफ यू थॉट के इस फाइल के अंदर जो आपने पढ़ा है द स्टोरी एंड्स ओवर हियर, यू आर रॉन्ग. ओके, because the examiner was still not satisfied by giving you that 8 mark question. He moved forward. And how did he actually move forward? He then gave you a question like this. Let me bring this on one screen and show it to you कि ये क्या हो रहा है. Okay, please try to see this. Hello. People here, please. I will zoom into this. लेकिन ये जरा गौर से देखो. इधर आपको x और y axis दिया हुआ है, right? But now read the question over here. People, please. Draw the lines. अगर आपको lines का पता ही नहीं क्या होती है और draw करना नहीं आता, you can't solve this question. पहली बात. दूसरी चीज, draw करने के बाद फर्ज करो आपने line draw कर भी ली, आगे वो कह रहा है कि इन तीनों का सोल्यूशन निकालो. इसका क्या मतलब कि तीन लाइंस विद these signs, not the equal to sign, इनका सोल्यूशन निकालो. मतलब क्या हो? So this is the understanding where we need to be at. अगर आप कहो कि सर मैं असेसमेंट पे लाइनें कैसे ड्रॉ करूं, वहां तो ड्राइंग टूल होता ही नहीं कोई. यू नीड टू सी दीज नंबर्स. दिस इज अ सिलेक्ट टूल. पीपल प्लीज. इब्राहिम इधर देख लो. दिस इज सिलेक्ट टूल. ये लाइन ड्रॉ करने का टूल है. नहीं देख रहे तुम? दिस इज ड्रैग एंड ड्रॉप. यानी फर्स्ट करो जब आपने इसकी लाइन ड्रॉ करनी है. इब्राहिम आउट प्लीज. बहुत हो. Honestly, I just have 2 minutes. I want to wrap this up by now. By no by. बाहर जाके बैठ जाओ ना. इधर बैठ के भी तुम क्या कर रहे हो? इधर तंग ही कर रहे हो. Okay. So after drawing your lines, you're not only gonna draw it, you're gonna label it properly also. और फिर आपने इन्हें सॉल्व करना है. हाउ डू यू सॉल्व इट व्हाइल दे ड्रॉन? आपको तो सिर्फ नंबर लाइंस आती है, आपको ये तो नहीं आता. सो दिस इज द नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड कि कैसे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हिच वाज ऑल अबाउट ग्रेडियंट्स y equals to mx plus c, मिड पॉइंट, डिस्टेंस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, कैसे मैं उसको लिंक करूंगा यहां और कैसे मैं इनको इनकॉर्पोरेट करूंगा व्हाइल आई ड्रॉ इट. ठीक है. So that was supposed to be done in this lesson. Why do I say this lesson? क्योंकि if you clearly see, uh, ये मैंने लेसन इसीलिए तैयार किया हुआ था कि हम ये भी पूरा करें, पूरा करें. But obviously you guys were so slow कि you could not keep up with the pace. And linkage of this topic with obviously uh, after this lesson अगर ये हम पूरा कर लेते, I would have given you a full to do list जो कि मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ. सो सबसे पहली चीज जो आप लोगों का होमवर्क होगा, यू नीड टू कंप्लीट द असेसमेंट क्विज ऑन कांग्रेस एंड सिमिलैरिटी. 5C का नहीं हुआ था. अब्दुल्ला गौर से सुनो, तुम लोगों ने क्विज ये नहीं दिया था, असेसमेंट का करना है. सम पीपल हैव गिवन इट, सम हैव नॉट. सारे कर ले और जो लोग एब्सेंट थे वो भी कर लें, जो नहीं थे एब्सेंट वो भी कर लें. यू हैव टाइम. इट्स अ टेक होम क्विज. नहीं मैं नहीं किया. ओके, टेक होम क्विज है, 1-2 दिन में करो. वंस आई स्टार्ट ग्रेडिंग आई एम नॉट गोना वेट और मैं
ग्रुप में कह दूंगा इस बंदे ने किया, फिर आप जानो मिस फातिमा जाने, सारा कुछ हो। ओके, since you guys were not comfortable with these topics, it's only because you did not do practice. I can guarantee कि जो लोग भी मुझे कह रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आई या मैं इसमें स्ट्रांग नहीं हूं, उसकी एक ही वजह है, वन, you did not attempt the practice questions in the notes file. You did not see the videos in the notes file. Not only that, अगर आप LMS खोलो, इस टॉपिक की इस टॉपिक की इस टॉपिक की अलग से वर्कशीट्स with their answers दिए हुए हैं, and without doing all of them you come to the quiz, you say I'm not good at the quiz, and then you try to find a reason why is that so. जाहिर है जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और ऐसे ही आप मुंह चुक के क्विज में आ जाओगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू गुड इन इट? राइट, मैं करने लगा हूँ सही, लेकिन तुम लोग को बता रहा हूँ कि तुम लोग के हालात क्या है। तलहा प्लीज, आपका अगला लेसन शुरू होने वाला है। नंबर टू, आपको याद होगा हमने पिछले हफ्ते सर्गोथर्म्स का टॉपिक खत्म किया है इन ऑल सेक्शंस, कोई सेक्शन ये नहीं कह सकता हमने नहीं किया। विच इज वाई, प्लीज शोर ना करो, विच इज वाई LMS पे उसकी 2 वर्कशीटें अपलोडेड हैं। इट्स हाईली रिकमेंडेड दैट यू टेक प्रिंट आउट्स एंड अटेम्प्ट इट। काफी हद तक सवाल हमने क्लास में अटेम्प्ट कर लिए थे, बट आई वुड स्टिल वांट यू गाइस टू डू इट ऑन योर ओन। सॉल्यूशंस आर देयर, उन्हें भी देखो, बट प्लीज टेक प्रिंट्स आउट्स एंड डू इट। तीसरा, ऑब्वियसली लाइक एवरी टीचर इज डूइंग, व्हाई शुड आई स्टे बैक? अब शायद हमारा कोई मैथ लेसन स्पोर्ट्स वीक से पहले खत्म होने से पहले ना हो, ठीक है? प्लीज बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, प्लीज। अब शायद हमारा कोई लेसन स्पोर्ट्स वीक से पहले ना हो, यानी खत्म होने से पहले, राइट? Which means, hello, you have practically some 10-11 days before the next math lesson. Ibrahim, जलाल नीचे हो जाओ। Alright, I'm sorry that was able to get you one. So you will get an assessment task. It is going to be marked sequences. It's a topic जो कि आपको बार बार रिवाइज करना चाहिए, मुफ्त के नंबर है, आप भूल नहीं सकते। 30 मार्क्स फॉर दिस। इसका भी पास पेपर का सवाल आएगा। साइमल्टेनियस इक्वेशन का सवाल शायद अब ना आए, क्योंकि आप लोगों ने दूसरी फाइल के लिए टाइम ही नहीं छोड़ा। इसका सवाल चलो मैं थोड़े बहुत डाल दूंगा, क्योंकि ये तो फिर आपको पहले से आता है, ठीक है? अगर हम ये भी फाइल पूरी कर लेते तो मैं आपको ये पूरा एक मजे का सवाल बना के दे देता, बट यू गाइस वर नॉट कोऑपरेटिंग, सो ऑब्वियसली ये नहीं ना, इतना फारिग नहीं हुआ। ओके, सो दिस इज वेयर आई स्टॉप